to tell. Today, the Congress party is blocking transparency, and let me explain. The Congress and its left allies, part of the India Alliance, have pushed a resolution in the Kerala Assembly against the new FCRA rules. What are these rules? The rules are all about transparency and accountability on foreign funding coming into our country. That's all. But why are they so scared of full disclosure? The FCRA norms do not kill democracy. They do not destroy the autonomy of civil society organizations. There is not one single provision in these rules that is anti-democracy or anti-freedom, if you will. It is simply asking, tell us where the foreign money is coming from and how it is being used. Now, viewers, is that too much to ask for national security? But the opposition is painting these rules as authoritarian. They say it will choke NGOs. They call it an attack on democratic freedoms, etc., etc. This is a clever attempt to protect the foreign funding pipeline that has been flowing unchecked for years. And let me tell you the biggest irony of all this. It was the Congress-led UDF government, and look at that document. The UDF government in Kerala that set up the Judicial Commission to probe the Marad massacre, one of the bloodiest communal carnages in Kerala, where innocent Hindus were butchered on the beach in 2003. The commission report clearly talks about or suspects foreign funding and the larger conspiracy behind the massacre. It points fingers at sources of money and weapons. But the same Congress and its so-called secular allies are fighting tooth and nail to block transparency on foreign funds. Who can forget that these so-called secular forces passed a resolution in the Kerala Assembly seeking favorable treatment for Abdul Nazar Madni, a terror accused. They stood together then for vote bank politics, and now they stand together against FCRA to keep foreign money tap open. Viewers, FCRA is about protecting India from external influence. It is about making sure foreign powers do not dictate our civil society, our NGOs through secret funding. The Congress and the left do not want this scrutiny. They want secrecy to continue that will encourage subversion. So Vivek Srivastava, what explains the resolution against FCRA? FCRA की क्या गलती है? नहीं, एफसीआरए की गलती नहीं है, मोदी साहब की गलती है। उल्टे सीधे अमेंडमेंट साहब ला रहे हैं। साहब, मैं कन्विंस करा करके एक आदमी को बोला, साहब मेरे मुल्क में मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, पैसा दो। अब महाराष्ट्र के लिए पैसा लिया था, वहां बाढ़ आ गई। मैंने इन्वेस्टर को फोन किया, मैंने बोला क्या मैं गुजरात में लगा दूं? उसने बोला हाँ, लेकिन मोदी साहब कहेंगे हमसे पहले पूछो, फिर हम डिसाइड करेंगे लगाया नहीं लगाया, और लगाया तो क्यों लगाया, वाई? इट इज बिटवीन द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द पर्सन हु इज फंडिंग, नंबर वन। नंबर टू, आपको डर लगता है सर, आपको डर लगता है, आपको लगता है साहब कन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मिशनरी स्कूल्स का रोल इस मुल्क की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा है। कॉन्वेंट स्कूल्स हैव कंट्रीब्यूटेड एक्सीलेंटली, बट हाउएवर यू डोंट लाइक इट बिकॉज इट इज अगेंस्ट योर सो कॉल्ड हिंदुत्व एजेंडा। एक मंदिर आपसे संभला नहीं जा रहा, लेकिन आप कह रहे हो हम देश में हिंदुत्व लाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। यू सी, देयर इज एन इंसल्ट टू द हिंदूज बाय दिस गवर्नमेंट when they say that money is going to be given as an inducement for conversion. सर, क्या इस देश का हिंदू इतना गया गुजरा है कि वो पैसे लेकर के धर्म बदलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात, क्या देश का हिंदू इतना गया गुजरा है? लेकिन इनको डर लगता है, खुद जाएंगे नहीं। आप कर लीजिए कन्वर्ट, आप बना लीजिए हिंदू, आपको किसी को बनाना है तो बनेगा कोई, आप नहीं बनाना चाहते। सर, इस्लाम जब 1400 साल पहले आया, लोग अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, हर जगह हाथ जोड़े, बताया ये पैगंबर मोहम्मद का मैसेज है, प्लीज आइए। आप गए कहीं? आप कहीं नहीं गए, और लास्ट में आप बोलते हैं हिंदूज का एक ही देश रह गया साहब, इंडिया। विवेक श्रीवास्तव, आप क्यों नहीं बनाते किसी को? वन मिनट सर, वन मिनट, थोड़ा ये क्रॉस कर रहे हैं आप लाइन, सुन लीजिए। ये जो 2003 की कमीशन रिपोर्ट है, जुडिशियल कमीशन एट दैट, ये तो कांग्रेस ने कमीशन सेटअप की थी सर। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, लेट मी रीड दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वन हैरिस recorded by this person to the effect that NDF was giving training in the use of firearms at Marad. NDF was getting foreign funds and that NDF has connection with Al-Umma. Al-Umma क्या है, you know?
फॉरेन फंड्स की बात हो रही है यहां पे. द कमीशन सेटअप बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट सस्पेक्टेड फॉरेन फंडिंग. उनका भी हिंदुत्व एजेंडा था क्या? वेरी गुड. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली. आप फॉरेन फंडिंग अगर किसी गलत चीज के लिए आप इंटरफेयर करिए ना, आपके पास इंटरफेरेंस तो है ही नहीं. दिस इज अबाउट ट्रांसपेरेंसी. आपने जो कह दिया, एक एग्जांपल दिया कि इन्वेस्टर को फोन किया मैंने, इन्वेस्टर, कि मैं यहां का पैसा गुजरात डाइवर्ट कर दूं, तो इन्वेस्टर को उस कॉल पे आप ये भी तो बोल सकते हैं कि इस काम के लिए दिया था, दूसरे काम में डाइवर्ट कर दूं. तो ट्रांसपेरेंसी पूछ रही है गवर्नमेंट, बता दीजिए क्या पर्पस है. सोशल मीडिया हैंडल्स है वो डिक्लेयर. आई एम श्योर यू कम प्रिपेयर्ड फॉर द डिबेट्स, विवेक श्रीवास्तव. वो जो गजेट नोटिफिकेशन है उसको उठाइए और टेल मी वन प्रोविजन विच यू थिंक इज नॉट राइट. यस, many are very wrong. Many, Number tell one, me one. I am inducement not asking for many. One. for conversion. If I'm having a Christian school, and I'm teaching, is it an inducement for conversion because I'm performing better? Where is it that an written in the inducement? If I'm notification, giving sir? Where is, midday no, meal- one. Don't deflect. Tell me one provision that is a problem. Anti-democratic छोटू से बताइए. नहीं है उसमें, कहां मिलेगा आपको? संजू वर्मा. Pranesh, I quickly want to first rebut Vivek Srivastava with data. About 20-30 years back, the Christian population in Punjab was less than 0.5%. They say that unofficially, the Christian population in Punjab today is between 14.7 to 15.43%. Point number one. ये कैसे हुआ conversion? 20-30 सालों में Punjab's demographic composition have undergone a sea change due to forced conversion or proselytization or what you will. Second point, this is what TMC has been saying all through the election campaign before they were booted out. 30-40 years back, the Hindu population in West Bengal was around 82%. The latest data shows that the Hindu population in West Bengal is down to 76%. And Muslim population has gone up by 175%. ये कैसे हुआ? आज बंगाल में 3.5 करोड़ मुसलमान हैं. ये कहां से आ गए? The third point, I want to focus on what Himanta Biswa Sarma said. He said the rapid manner in which the demography of Assam is changing is very concerning because every 10 years, the Muslim population in Assam is growing at the rate of 37%, but the Hindu population is not even growing at 10%. And do you remember there was a report a few years back by Niti Aayog which said that between 1950 and 2015, the Hindu population is down by 7.8%, Muslim population up by 43%. Sikh and Christian populations were also down by 5%. No. While we'll get to all of this, the fundamental question is the people who are, bringing in resolutions to oppose FCRA norms. Which provision is, anti-democratic, will not allow NGOs or organizations to work? Dr. Ranganathan, आपको कोई ऐसी clause उसमें दिखी है? Look, first of all, let me get one fact right. I completely object to the incendiary words being used by Vivek Srivastava as far as Hinduism is concerned, the taunting and the acceptance of the fact that non-Hindu religions have been not just coercing, have been inducing, have been forcing people to convert. It is not the BJP that brought the first anti-forced conversion bill. It was the Congress in the 1960s. But as always, Vivek is completely short on facts. That's not the point. The incendiary language is condemnable. What he's taunting the Hindus, why don't you go and preach? Hindus don't have this habit of going and preaching. The other religions have this habit of doing it. So first, get your facts right. Now let me come to the FCRA amendment. I support the amendment bill. I find it is important for our national security concerns and also the integrity and security of the country. But I believe that it requires a little bit of tweaking, especially one clause, which is that if the license is struck off, then the government's designated authority can take over the assets. Now, I think that has to be time bound. To give you an example, if an NGO was running a school that was made in 1950, it was running for 70, 80 years, and right now its license is cancelled, the government can take over that asset, meaning that school. Now that is unfair.
So I think the taking over should be time bound, should be current project that the NGO was running where the FCRA license got terminated. Otherwise, if you go for historical assets, I think that should be tweaked. Okay, that's a fair point. It's a technical point, but Vivek Srivastava can't tell me one provision according to him which is, a problem. Ravi Srivastava ji, आप बता दीजिए. Good evening, Pranesh. I have been educated in my early childhood in the missionary institution only, all through. Now, point here is FCRA provisions amendment is being used as a tool to choke the foreign contributions funding to respective NGOs. And not one, the reputed ones, the Greenpeace, the Transparency International, the Oxfam, the Rajiv Gandhi Foundation, the Rajiv Gandhi Charitable Trust, many have closed down their operations. सर वो तो in फॉरेन India because फंडिंग of नहीं this है kind सर, of- वो तो यहीं के, बट कोई बात नहीं, रेटोरिकल फ्लरिश. which is directly affecting your foreign funding. I mean, that is whatever you call it, a contribution or a funding, but it is only choking these institutions who तो are doing a good work in other राजीव countries गांधी as well. ट्रस्ट में पैसा आते रहे, इसीलिए ये रेजोल्यूशन लाए हैं. सीधा ऐसे ही बोल देते विवेक श्रीवास्तव. व्हाई वाज ही बीटिंग अराउंड द बुश? कहां यहां वहां की बात करने लगे. बोलिए विवेक श्रीवास्तव, यू हैव वन प्रोविजन. जस्ट 10 seconds, डॉक्टर रंगनाथन, आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. आप कह रहे थे हम हिंदू तो कन्वर्ट करना नहीं चाहते. एक मुसलमान अगर हिंदू बनना चाहता है, आप उसको किस वर्ण में डालेंगे सर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशूद्र? जरा ये बता दीजिए. और यही वो कारण है जिसकी वजह से हम कन्वर्जन करते नहीं है. Because if somebody from another religion comes to our religion, we do not know which varna to put in. It is the casteist problem of us. That नहीं is why सर, we never went नहीं एक मिनट, anywhere. ये कास्ट प्रॉब्लम नहीं, कास्ट प्रॉब्लम दूसरे रिलीजन में नहीं है विवेक श्रीवास्तव. हैव यू हर्ड ऑफ ओबीसी मुस्लिम्स? सुना है कि नहीं इस्लाम में कहां आपने? लिखा है सर? हाँ, नो, इन क्रिश्चियंस एंड इन ओबीसी मुस्लिम मैं बोल रहा हूं, क्रिश्चियंस में कहां जा रहे हैं? हैव यू हर्ड ऑफ ओबीसी मुस्लिम्स? Everybody can become a father. They pray together. Vivek Srivastava, have you heard There's of no OBC caste Muslims? religions. It's only in Hindus. Yes. That is a provision for the welfare. Oh, in this that is a country. It provision not for the considered welfare. Part of Islam Yeah. religion. Okay, Ranganathan and Sanju Verma in that order. Yes, doctor. No, Pranesh, this time my anger is not directed at somebody else but at you. आपसे कितनी बार कहा है कि एक बार दोनों एक साथ विवेक मत लाया करो. इट इज टू मच टू हैंडल, नॉट जस्ट फॉर अस बट फॉर योर व्यूअर्स एज वेल. एक पैनल में एक विवेक रखा करो. चलिए, वो तो एक हमारे पास तो 3 थे, एक तो उठ गए फर्स्ट डिबेट में ही. संजू वर्मा. यस, यू नो विवेक श्रीवास्तव और ये जो अमन की आशा गैंग है, जब कोई कहता है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये कहते हैं वाजीबा. बट यहाँ पर जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, ये कहते हैं दिस इज अ कम्युनल वॉर मॉन्गरिंग स्लोगन. सो आई डोंट वांट टू गिव लेसन्स टू विवेक श्रीवास्तव, बट लेट मी जस्ट very quickly correct Mr. Ranganathan. Yes, the designated authority can acquire assets, but it need not be permanent. It could also be just a provisional acquisition, which can then be challenged in a higher court of authority or under an adjudicating authority. तो ये नहीं है कि किसी एनजीओ का यदि लाइसेंस भी कैंसिल होता है, they can still claim that their assets cannot be completely taken over. So there is a system of checks and balances because the Modi government is not a banana republic. मैम, लार्जर क्वेश्चन तो एड्रेस कर दीजिए. रवि श्रीवास्तव बोल रहे हैं राजीव गांधी ट्रस्ट में पैसा चोक करने के लिए आप लोग एफसीआरए लाए. नहीं, मैं बात करना चाहती हूँ प्रणीत जी वेरी क्विकली. 2024 में after the initial amendment to the FCRA norms, do you know how many NGOs in India were deregistered? 24,000. Imagine each NGO was having 5 employees. तो सोचिए कितने लोग, ये जो ग्रीन पीस फाउंडेशन, ऑक्सफैम, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, मतलब 1-1.5 लाख लोग तो यही काम करते थे, एंटी हिंदू एजेंडा चलाते थे under the garb of being an NGO. But I think the one step which is absolutely commendable is that the government has said not more than 20% of the funds collected by an NGO from foreign sources can be used for administrative purposes. इनका पेट इसलिए
Vivek गलत कर रहा Srivastava, है। just tell our viewers, try and convince them why you have a problem with FCRA norms. एक provision तो बता दीजिए सर, one provision. अरे भाई मुझे सर मैंने आपको बता दिया पहला ये कन्वर्जन वाले पे ये बेकार की बातें हैं ये क्योंकि बेकार की बातें आपने तो नहीं, किसी मुझे को read from the rules. Tell me which rule. No, I have already told you. Number one. I already told you. I am saying I don't know. आपने नहीं बोला है. Dr. Ranganathan. नहीं, ये इसीलिए इनके 0 मार्क्स आते हैं, MARX, ये अंडा लाते हैं। बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव, बोल दीजिए। Vivek Srivastava, I am challenging you to tell me one amendment that you oppose in FCRA amendment. One. Name one. I have named one. You may call me a Sanghi, but Sanghi has named one. I want a commie to name one. हिम्मत है तो बोल दो। अरे मैंने पूरा देखिए मैंने पूरा गाना गा दिया और फिर भी आप मुझे कह रहे हैं कविता सुनाओ। नहीं है सर आपके पास, आपने तैयारी नहीं की है विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल डू दिस अगेन समटाइम नेक्स्ट वीक। विवेक श्रीवास्तव प्लीज आप तैयारी के साथ आइएगा। डोंट बी लाइक निखिल जैन, कम हियर विद ब्लस्टर एंड देन रन अवे। डोंट डू दैट। यस डॉक्टर रंगनाथ। इसीलिए ये अभी सिंगल हैं, क्योंकि ये जब दूल्हा बने थे तो भी तैयार नहीं थे। Okay, let's leave it at that. Viewers, the news are with Navika Kumar on the other side.